बूम फैक्टर है बड़ा सारा यहाँ पे, है ना? We can see that. Welcome. So good to see you, sir. मतलब कमाल ढा रहे हो आप अपनी fashion choices से भी यहाँ पे. You know, we have to talk about films. We have to talk about disruption. And उसके लिए एकता मैम, this one's for you. Please tell me. You know, एक समय था टीवी में एक ही चीज देखते थे, फिर हम पांच आया, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आया, disruptive था काफी. And everybody started following the trend. उसके बाद आपने कहा नागिन लेके आऊंगी, टीवी की बात करें, वो भी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया. फिल्मों की बात करें, LSD, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, उड़ता पंजाब एंड व्हाट नॉट. एंड आई हैव टू टॉक अबाउट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड साथ ही द डर्टी पिक्चर. डायलॉग बाजी, असली एंटरटेनमेंट, कल्ट, ये होता है. अभी यहाँ क्या होने वाला और कैसे ये कल्ट मूवीज की शुरुआत हुई? टेल अस. एक हमारे जो प्रोड्यूसर, आई डोंट नो व्हेयर ही इज हियर, Sunir. He'll be with us. Yes. He brought a script to us. हमारे पास ही script आई और script outstanding थी. And he said, I'm going to Anurag for it. Right. फिर one day I was walking and Anurag said, मैंने बहुत दिनों बाद एक script मुझे अच्छी लगी, मैं कर रहा हूँ. Are you on? I hear you are on. I said, I've told them, if you're on, I'm on. It was as simple as that. Because you needed a director like Anurag to do this film. Right. Was at that process wanting, मैं Alt बनाया था. Alt was a movie brand to make, see, सारी फिल्में बड़ी होती हैं, कुछ फिल्में ज़ोरदार होनी चाहिए. And the idea was कि चाहे वो लुटेरा हो, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, they all came from Alt. Then Alt became a mass brand with digital. Right. So the time had come to launch a new brand. Right. So we thought कि cult, which is a culture, it came from there. Yeah. So we decided to launch this brand with this film because the script, the absolute riveting thriller that this is, without being typical, without being in the normal space, you know. And Anurag has added so much newness to it that I was like very happy that they took me on as a studio. I'm very happy that Ektaa chose Baaraa to be the film to launch cult with. It's a big honor in itself. और दोबारा तिबारा, every time there is so much excitement when we see directed by Anurag Kashyap. दोबारा, yes. दोबारा, yes. एक तेरा साथ, वैसे वो मेरे को वो याद आ गया अचानक से, दोबारा when I saw it. दोबारा the time portal. Yes. अभी बहुत सारे राज खुलने वाले, मैं बता दूं. अनुराग सर, every time you know we see directed by Anurag Kashyap, बड़ा सारा excitement होता है. And you have in a way redefined Indian cinema. मैंने कहा ना, disruptive वाला टैग यहाँ लगा है, redefine करने वाला आपको, be it Gangs of Wasseypur, 5 और देवडी. यहाँ क्या हो रहा है? वो तो आप देखोगे 19 तारीख को. क्या हो रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा. हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा because it's unlike anything I have also done before. मैं भी थोड़ा डरा हुआ था. Or the amazing thing is the producers and everybody trusted me so much to bring my own self to it and allow us the changes. Me and 𝗵𝗵𝗶𝗵, who's also the writer, who was part of you at one time. He was a film critic at Times of India. He's the one who's adapted it. And also allowing us to play with it, to make it more exciting and everything. So I'm just grateful. As I said, you know, disruptive या redefine करने वाला या off-roading करने वाला, मेरे दिमाग में वही आता है. You guys love off-roading. सड़क पे तो कभी चला ही नहीं. है ना? तो कौन यहाँ ज़्यादा disruptive है? Is it एकता कपूर, EK और AK? I think हम लोग दोनों ही. I can't be EK. You have to always lead with your director. And my director leads, we follow. We support him. That's our job. For me, the amazing thing was when she saw the film, she said, कुछ भी हो जाए, ये film मैं theatrical release करूँगी और मैं cult इससे launch करूँगी. And this, her whole gang of friends. Right. Like each one called me and they said, ये क्या है? Right. So that was very empowering. I think for in times like today. In today's times when it's very easy with an Anurag Kashyap film to go direct to OTT, you know. कोई ना कोई people were like very interested in buying it. We had a post-theatrical OTT deal with Netflix, but it's already there. Netflix is already there on there. But there she were other still people who decided wanted to that I'll buy take this film and put it out in cinemas. digital and wanted to give us a lot more money. But movie देखने के बाद I was, I came out of the movie and I was like,
I needed a minute. I said ये बहुत अच्छी film है. तो मैंने अपने and I've done this 2-3 times before in life. Called up my mom कि थोड़ा बहुत risk ले ले. I said इतना ही लेंगे, पीएनए का लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, but उतना ले लें. And she said क्यों? I said ठीक है मैं अपने दोस्तों को भी दिखाती हूँ. मैंने घर पे एक screening रखी, अपने दोस्तों को बुलाया and they all came out and they all looked at each other and said bring it to the theaters, yeah. I said only South films are doing well. Only big films are doing well. Only mass films are doing well. This is nothing like that. But everyone said like, like why don't you do this, because the film is so good. There are two types of films. One, which will get appreciation on OTT. And they have viewers. But a film gets patrons when somebody pays for it. So this I felt as a film deserves a patronage. Right. And this is because the team put in such a good job. I said thoda risk financially मैं ले लूँगी, which is really small. Luckily I have not put too much expectation on the film. And a little bit I wanted to give the film the chance of having a patronage. Right. We could all see that twinkle in your eye when you are talking about this and the entire journey इसके साथ की. आपका साथ दिया है इसमें सुनील खेत्रपाल साहब ने, ladies and gentlemen. He'll also be joining us on the big screen here, जो कि मेरे right में है. And he's produced movies in Hindi and Tamil. साथ ही केसरी की बात करें, बदला की बात करें. He's been there. Thank you आने वाली है sir. The intern का Indian adaptation आने वाला है. So welcome Sunil sir. Thank you. Sir, I can see you enjoying yourself, sir. कहाँ हैं आप? Please बताइए. लंदन में. लंदन से मेरे DVD ले आना. Anurag, this is not DVD. This film started with a script. You came on script. Actors came on script. मेरे DVD जो Amazon से deliver होंगे वो ले आना. Direct to home. So, sir, please tell us something about this journey. Coming together with Ektaa Kapoor, Anurag Kashyap, 𝗙𝗵𝗲𝗍. This amazing team, and producing this Kamal ka movie that we'll be getting to see. No, this film is unique. Before this, the director of the original film had made Invisible Guest, which we made as Badla. Right. And while we were making Badla, we got hold of the script of Miraj. So the unique thing about this is that even before the Spanish film got made, we had picked up the Indian language rights to the script. Everybody associated with this film has actually come on the English language script. So technically not something that you see and then you say, okay, I want to do this film. It's unique in the sense, the source material, we tend to pick up everything which comes from Spain from this writer-director. Right. And Anurag had, it's like a no-entry board in front of Anurag's office home phones when it comes to remake. But this script he read and came on board, which is very heartening. 𝗙𝗵𝗲𝗍 had read the script and said yes to the film. Ektaa, when the film was presented to her, she came on board quickly. We needed a partner like that because it's a, it's a unique film in the genre. So it's been a great journey. Just that when you see the trailer, you will see a gated community with 3 houses. And we traveled all over the world to do recce's and try and find those houses. We couldn't. Eventually, we found them in our backyard. So it's been unique, and it's great to see that it's coming in theaters next month. Right. Sir, also IIFFM पे भी दिखाने वाले हैं ये फिल्म, Indian Film Festival of Melbourne. Sir, ये international audience को मेरे को लपेटे में लेके चलना ऐसा कुछ होता है शुरू से? Because नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब especially when you're making a film, right, which in itself is a remake, और original film का जो filmmaker जो सारे festivals में play करता है, same festivals are playing this, right, and it's being the opening film. Yes. And it is not playing at the art house festivals. It's playing at the genre festival, which is as commercial as it can get. So I'm saying the way it is, yeah, 𝗙𝗵𝗲𝗍 and all those other things that we can't say because it's unofficial. Right. But it's even post-release is going to play at so many festivals it's lined up. Yeah. So वो जो response और reaction है, वो बहुत ही ज़्यादा overwhelming है because पहले रीमेक के साथ ज़्यादा होता नहीं है ऐसा. It is not, of course, it is not. Yeah, रीमेक के साथ ज़्यादा होता नहीं है. And we are playing at the genre festivals. Right. Genre festivals is where mainstream commercial thrillers and horrors get played. धमाकेदार film, as she said, जोरदार धमाकेदार film. So what we'll do is we'll have a quick photo op
for you wonderful people, है ना? हो जाए एक, and then we'll take it forward with your questions. Okay, there's no hero heroine on the stage. It's the producer हमारी heroine जो and है the director. Bear with us. हमारी हीरोइन SRK के साथ डंकी शूट कर रही है. Alright. So we'd also want you to stand over here with Sunir sir. ये virtual एक photo हो जाए. Virtual photo अब भी बनता है यार. Look at his smile. कितना सही दिख रहा है वहाँ पे. पूरा माहौल बन रहा है पीछे. You know, it's as if we have some effect or something. Sunir sir, you're killing it. Yeah, बिल्कुल सब virtual कर रहे हैं हम लोग. All right. So now with this, ladies and gentlemen, it's over to you, wonderful people, and you can shoot your questions. Here you go. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Hi, Shadma this side from Home Bollywood. Center. This Yeah, side, hi. yeah. So the trailer look amazing. Congratulations for that. Thank and you. My question will be from Ektaa ma'am. Ma'am, you have worked with Kangna earlier. उनके साथ जो आपका collaboration रहा, उसके बाद हमने further भी बहुत सारे दूसरे collaboration देखे. अब तापसी के साथ आप काम कर रही हैं. तो हम क्या further collaboration उनके साथ भी देखेंगे first? Absolutely. It's an amazing thing to collaborate with such amazing actors. और अगर कोई project इतना interesting हो, तो maybe I will only go to the actors and say कि यार please ये script पढ़ लो. So it is a very very heartening thing to work with great actors, and they bring in a lot more. Kangna is a brilliant actor, and so is 𝗙ecie. Right. And since we all know that Kangna said once कि 𝗙ecie is, 𝗙ષती Kangna Ranaut, I need to know from you what similarities do you see in Kangna and 𝗙cie? ये कैसा question है? There is no similarity. There is only one similarity. Both are amazing trailblazer women, and to play them against each other is not your and my job. We're women. We adjust each other's crown, Right. not remove it. Thank you so much. Hi. Sanchita here from Instant Bollywood. My question is to Anurag sir. Hi. Okay. As we know that Baaraa is the remake of Mirage. So I wanted to know how true is Baaraa to the source material, or have you made it completely your own? No, I can't make a film if I don't make it my own. And So- another, yeah. I can't. But in the sense, yeah, the essence of the story is obviously taken from there. But like Sunil said, that we started from the script. The film had not yet come out. So the whole adaptation and everything came from the script, and then we also had to keep in mind that who we are speaking to as an audience. And हम लोग ने अपना काम किया. हमने कभी film को refer ही नहीं किया. So original film को refer ही नहीं किया, which is why probably also why it is so different, is why everybody else is also reacting to it like that. And I have another But question. I never wanted to do a remake in my life. 𝗙cie had reached out to me, say, "ये script पढ़ो, आप find me a director for this." So I did not read the script. I tried finding a director. And when I read the script, I was like, "यार तू इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है? मैं खुद ही करता हूँ." Anurag sir, sir, there is a question just from my a minute, side. Yeah, Surya from I'll come Bollywood back. I'll come Crazies. back to you. Yeah. Don't worry. My question is that मनमर्जिया, चोक्ड और ये फिल्म दोबारा काफ़ी वक्त ले रहे हैं आपको डायरेक्ट करने में. हम सब आपकी फिल्में देखना चाहते हैं हर साल एटलीस्ट. Why this is so late, and है ना, वो भी थिएटर्स में तो मेरे ख्याल 4 साल बाद. ये फिल्में तो बना रहा हूँ मैं लगातार. और पहले दोबारा को रिलीज होने दो, बिकॉज एक तो थिएटर काफी समय से बंद थे और माहौल थोड़ा सा अभी सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग सा है. मतलब जैसे इन्होंने बोला, साउथ की फिल्में चल रही हैं, एक तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. एवरीबडी इज रिस्किंग रिलीज. इट्स लाइक सच अमेजिंग थिंग, एवरीबडी इज रिस्किंग रिलीज. इट्स लाइक
हमारी फिल्म का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज आवर फिल्म इज ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे है आफ्टर फ्यू मंथ्स, बट ऑलरेडी आने वाली है. बट द थिंग इज उसके बावजूद हर डिसाइडिंग दैट ये फिल्म मैं थिएटर में रिलीज करूँगी वाज वेरी हार्टनिंग एंड वेरी एम्पावरिंग, बिकॉज जितना ये जिद्दी है तो सबको पता है. और इसने जब डिसाइड करके मेरे को बोला तो मैंने बोला हाँ हाँ, मतलब वो इमोशनली आप देख के रिएक्ट करते हो ऐसा बोल दिया होगा. बट शी जस्ट डिड नॉट लेट ऑन. शी सेज यू बिलीव मी एंड यू हैव टू बी देयर विद मी एंड we'll do it and we'll put everything out there, and she has stood by it. And for me, and then the another surprise came in. It was not originally sent for festivals at all. I was passing through. I was on my way to the US. I was passing through, and the final cut of the film, 𝗙ecie was sitting there, who was the second unit director as well, who was like literally my collaborator in everything. उसने मेरे को वो final जो है हमारे लैपटॉप पे लोड किया कि आप चेक कर रहे हैं ना फ्लाइट में कि सब ठीक है कि नहीं है. और आई हैड अ लॉन्ग ले ओवर इन लंडन, एंड एट दैट टाइम द फेस्टिवल, द 2 days लेफ्ट फॉर द बिफोर द फेस्टिवल application date was to be logged. I was there in London and I was hanging around with people at BFI, and they were like, यार तुम्हारी कोई फिल्म नहीं देखी बहुत टाइम से, we have not seen your film, you have anything? I said, I've just got the final copy of my new film, but it's a remake, because I know festivals do not take remakes. तो मैंने पहले बोल दिया रीमेक. सो अभी जब ओरिजिनल फिल्म जब आएगी तब मैं दिखाऊंगा. कैन वी सी इट? आई सेड मेरे सामने बैठ के देख सकते हो, देख लो, बिकॉज यू नो इट्स अनरिलीज्ड फिल्म. सो आई सैट देयर व्हाइल दे सॉ द फिल्म, एंड सडनली देयर वाज दिस रिस्पांस एंड इट जस्ट वेंट एक्सप्लोडिंग आफ्टर दैट. एंड फ्रॉम ऑल साइड्स व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सप्लोडिंग, यू आर लाइक यार हमें शायद नहीं दिखता है क्योंकि हमें अपना बच्चा नॉर्मल कुछ दिखा होगा. एंड देन इट्स एवरीवन स्टार्टेड पिकिंग इट अप. एक जगह गई तो दूसरे ने बोला, दूसरे ने बोला तो तीसरे ने बोला, फिर सबने देखना चालू किया. एवरीबॉडी स्टार्टेड पिकिंग इट अप, एंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर सीन इट हैपन विद द रीमेक. सो दैट्स व्हाट गिव्स मी अ बिग कॉन्फिडेंस. रीमेक्स डोंट गेट पिक्ड अप लाइक दैट. में तो सब अलग अलग थियरीज दे रहे हैं कि हम लोग मासी फिल्म बनाना भूल गए हैं. कोई बोल रहा है 70s 80s में जिस तरह फिल्में हमारी हिंदी फिल्म में रूटेड नहीं है. बहुत सिंपल. आप किस तरह से देखते हैं? बोल रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सा आंसर है. आप जब तमिल फिल्म देखते हो या तेलुगु फिल्म देखते हो या मलयालम फिल्म देखते हो, वो अपने कल्चर में रूटेड है, चाहे वो कल्चर मेन स्ट्रीम हो चाहे नॉन मेन स्ट्रीम हो. हमारी फिल्म में रूटेड ही नहीं है. हमारे यहाँ जो हिंदी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हिंदी फिल्में बना रहे हैं, और हमारी फिल्म में रूटेड नहीं है. जहाँ रूटेड होती है वहाँ चलती है ना. क्यों नहीं चलती हैं? हमारे मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स जब अपनी फिल्म बनाते हैं तो चलती हैं. हम लोग अपनी फिल्म नहीं बना रहे हैं. गंगूबाई वर्क की ना, भूल भुलैया वर्क की, वो जो 2 फिल्म मेकर्स थे उन्होंने वही फिल्में बनाई जो वो बनाते हैं. हाँ, बाकी फिल्म मेकर्स वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं बनाते. वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जॉनर चेंज कर रहे हैं, अपना कुछ और कर रहे हैं. वो इट्स लाइक हम लोग रूटेड, जब जैसे ही हम रूट होंगे अपने आप फिल्में चलेंगी. सिंपल सी बात. अनुराग, एक सवाल और है मेरा. किल बिल जो एक कल्ट फिल्म मानी जाती है हॉलीवुड की, उसका रीमेक नहीं बना रहा. वो रीमेक नहीं है, होमाज है. होमाज पे नहीं बना रहा. अच्छा, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं बनाऊंगा. उसके बारे में कुछ. बहुत सिंपल सी चीज है. देखिए, आप एक क्लासिक का रीमेक बनाना बेवकूफी होती है. एक फिल्म ऑलरेडी है इतनी बड़ी क्लासिक, में क्यों उसका रीमेक बनाऊंगा? तो अगर आपने मेरी टी शर्ट देखी होगी जो मैंने अनाउंसमेंट देखी थी, किल बिल था, खून भरी मांग में था. ठीक है, तो खून भरी मांग जो है किल बिल से पहले बनी थी. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. मैं क्या बना रहा हूँ मैं अभी बताने का कोई फायदा नहीं है. जब मैं बना लूंगा आप देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना क्या है. Anurag, slightly to your left, over here. Hi. Anurag, you've done some wonderful thrillers over the years, but this is the first time we see sci-fi elements also seep into a story. Why such a late interest in science fiction? I'm very scared of it. I'm very scared of science fiction. I'm saying you have on one. See, today the world is one place, right? OTT पे आप सब देखते हो. हमारी ऑडियंस कैसी है आज की डेट में? अगर आप नोलन नहीं हो सकते तो उधर घुसे मत, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी देखती है. अगर आप उस लेवल पे नहीं जा सकते तो जाओ ही मत, अपनी फिल्म बनाओ. तो मैं तो एक तो पहले स्पेशल इफेक्ट से बहुत डरता हूँ, साईफाई से डरता हूँ, सबसे डरता हूँ. वो डर जाने में बहुत टाइम लगा मेरा, और वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह चला गया. तभी मैं बोल रहा हूँ, इतना अगर ओवर कॉन्फिडेंट होते तो मैं फिल्म बनाने से पहले बोल देता देखो हर जगह जाएगी.
ये तो फिल्म धीरे धीरे लोगों ने देख देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ ये कमाल है, लेकिन मेरे अंदर तो वैसे ही रहता है कि पता नहीं है यू हैव डन जस्टिस और नॉट, बट आई नो वी गेव इट आवर बेस्ट. सो अभी कहाँ जाता है क्या जाता है, रिएक्शंस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Ekta, Anurag sir. I'll just ask Ekta something. Ekta, it's quite heartening what you said that about releasing 𝗂𝗏𝗏 in theaters, and you would also have Divakar's film LSD 2 that was announced, and it's a nice throwback to a time when OTT had not come, and we would see these films and the first LSD and Anurag's films in theaters. Would cult be pushing in that direction and bringing these sort of indie films into theaters again? So I'm hoping. I definitely want to release LSD 2 and now 𝗂𝗏𝗏 as a beginning film. Eventually, it's going to be the response that will decide, because we can't take too much of a risk. We've taken a calculated risk here. LSD 2 is like Love in the Times of Camera was LSD 1. Love in the Times of Internet is LSD 2. So it's quite interesting to see how Divankar has now chosen the social politics in the time of Internet in LSD 2. So with these maverick makers, if I am going to be spending their time to make a film for cult, my job is to give it the best push I can give it. Till the last leg, I will try to get it into the theaters. Because I have seen at a time when LSD released, it might have not done well everywhere. But in Bombay on Sunday, you could not get tickets. And it was a film with no cast. You could not get tickets. People were calling me up. I was like, and that feeling, no amount of appreciation on OTT can give you. And I think I'm a euphoria junkie. I want that euphoria of a movie releasing in a theater, because that's what we all come for. I mean, it is the magic of a cinema that you see a movie in. And this is the perfect date movie. Young people will go. We don't have great thrillers in the theater. And let's do that. Anurag sir, hi. This is 𝗙DC here from News 18. Here. Hi. Yeah. Center. Hello. So I wanted to know from the trailer, I got shades of Stranger Things and Dark. Good. Wow. Yeah. So was this just coincidence, or is there some kind of inspiration there? No, it's not like that. I have a. If you look at the red raincoat, it's a creation of Prashant Sawant, who's my costume person, who puts in a lot of thought behind everything. So you have to ask this question to him. I can give you his number. But trust me, when you see the film, and I felt that first scene where the kid is on the bicycle, it hits you like Stranger Things. The film is nothing like Stranger Things. But at that moment, you feel, finally, we have this sci-fi thriller that I thought on my own that, oh wow. So there's nothing like Stranger Things, but you will get that little bit, that tingy feeling when you see Stranger Things. It's in the zone of dark and feeling you get Stranger when Things and you everything. Get to see a sci-fi great narrative, that definitely happens. The film is actually very emotional. Interestingly, you'll know when the movie unfolds, how it has such great, because sci-fi is a world unexplored. So you will always find references with things that resonate. Hi sir, Anurag sir, Sanchita from Instant Bollywood again. Over here. Left, right, yeah, okay. So I wanted to ask you, what is the significance of the title? Why 𝗂𝗏𝗏? Because even in the teaser, I think it's a very smart title. Yeah. Anurag's title, very smart title. And I think it serves a purpose. It's a very smart title, and the credit for it also. The 𝗂𝗏𝗏, sorry, sir, मेरे पास mic है. So 𝗂𝗏𝗏 is a time which is very significant in the film. It's something that happens again, a repetition, and it's about second chances. So on every level, everything. The film, it is the perfect title for a film, and the credit of it must go to the writer Nihit Bhave, who came up with the title, who also adapted the film. It's amazing. Anurag, Justin here towards you, right here. Hi. Hi, Justin. Hi, Ekta. Hi, Anurag. Hi. The discussion today, of course, is that only well-mounted spectacle films, especially from the South, will work at the box office. Every other film, especially mid-sized films, will struggle. Anurag, your career has been a testimony of small films going big. Are the current times scary to you as a filmmaker? And does this really signal the end of what once was called the multiplex film era? That is a question you must ask
the other filmmakers. For me, times have always been scary, forever, throughout my career. And the idea is to go out and risk it. So, yes, for me, the risk factor is same here as it was for every other film. It's a really tough time for people who have established and understood the market and make very big films. For me, it's the same. Hi, Ektaa, this is Priyanka. Hi. So I wanted to ask, I'm just following up from what Justin asked. This is, of course, the times that we are. People are, of course, feeling that it's very unpredictable to kind of gauge what the box office will say, how the audience will reject or accept films. But as a producer, do you feel this is just a phase or the beginning of perhaps something permanent that would change how Indian cinema will go forward? And just the second part of it is also what the concern is that maybe the films with a lot of female stars might struggle. And why I ask this is because the films that are doing very well are led by, are mostly male-centric action spectacles. And we've done a lot of progress in Hindi films where, women-led films or female stars in the center, perhaps doing the kind of films that they were, telling the stories that were risky and brave, were getting that acceptance from masses. Do you think we might undo that progress? Because in a lot of action films, female stars are just kind of relegated to maybe object of desire. How do you see that? I think Gangubai just came and answered your question. So there's nothing like an actor who's male or female. It's a popular actor or not a popular actor. There are a lot of male actors who are not doing well also. So we should really give this a commerce bent instead of a gender bent. The first part of your question is, today a film has given up euphoria for longevity. So there's a pre-sale, it's de-risk, its longevity is increased because if you don't catch it in the theaters, you're going to see it on a digital platform. But what you have given up for it is euphoria, the magic of cinema. So unless the film is really large, people are not paying because they believe that they can see it later on a platform, which is great for a maker because sometimes films that don't get patronage in the theaters land up being watched and then appreciated later. So the longevity helps a lot for if your film is good. But films which are the multiplex films, yes, suffer because they usually people choose to watch a digital route later. It doesn't mean they don't want to watch the film, but there's no urgency because they don't promise a theatrical experience. The reason we chose Baaraa to come in the theaters is because when you go with your friends on a Sunday evening to watch a movie, not everything for young India or young urban, young mass India is going to be about seeing large-scale dhoom-dhadam fights. Sometimes you want to go and catch a film that you can talk about at dinner later and have conversations about, especially because it's superb cinema. We're hoping that the movie gets that kind of patronage because if I'm wanting to go to the theater on a Sunday, I saw Elvis on so many weeks because I was like, there's a lot of audience, Top Gun. There are films that people will watch if the film is good. And that will add to the euphoria when you come to watch it on an OTT platform. And we're hoping to convert that audience that wants to see a film in the theater. So like I said, there are good and bad to every, invention. And the OTT invasion has the greatest advantage for small films because their longevity has increased. If you missed it for 2 weeks, it doesn't mean the film has become, satellite won't buy it because it's not a mass, it's not a family film, And also, since you can't, we are not, nobody's a Nostradamus. We are not soothsayers. We don't know. In the sense, we are also watching. The thing is, but you have to take a chance. It's like you saying that bachpan mein, when I came to Bombay, I needed a guarantee that I will become a filmmaker and I will make a film. You can't. You risk your life, right? You come out and you're like, I want to do this. And you do it. And then let it tell you, no? Like life may, if you don't take that little bit of risk, you'll give up on euphoria, which is what makes us run, And it doesn't matter where people will watch films. I'll continue making films.
तुम्हारी चॉइस है कहाँ देखना है देखो। अनुराग जी मेरे दो सवाल हैं। Before we wrap up, we'll just take two last questions. मेरे दो सवाल है अनुराग जी आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ आपसे दो सवाल है। एक तो फिल्म जो थिएटर में भी रिलीज होगी साथ में OTT पर भी जाएगी, तो दोनों अलग अलग वर्जन होंगे क्या? नहीं एक ही वर्जन होगा, बाद में जाएगी, बाद आएगी वो बाद में आएगी, OTT पे काफी बाद में आएगी। ओके लेकिन अगर आपकी फिल्म जब OTT पे जाती है, आपकी फिल्में मतलब टाइम के बहुत ही अहेड रहती है, तो वो आप विदाउट सेंसर ही डालेंगे कि विद सेंसर? नहीं, एक ही वर्जन है। हमारी फिल्म ऑलरेडी UA सर्टिफिकेट है, हमारी फिल्म ऑलरेडी सेंसर से क्लियर्ड है। We already have a UA certificate. It's cleared by the censor. Same version will go everywhere. Same version is playing at the festivals also. कोई अलग वर्जन नहीं है। ओके निर्माता है अगर तो उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, सुनीर जी, मिस्टर क्षेत्रपाल, तो आप ही बता दीजिए लाइक whenever the film is getting released in a international arena, maybe in a film festival or so, तो ऐसे होता है कि यहाँ इंडियन मार्केट जो थोड़ा सा उसमें थिएटर तक जाने के लिए कंजूसी करता है, मतलब नहीं जाते हैं लोग देखने के लिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं हमारी फिल्म जा रही है हर जगह, लोग देख रहे हैं, हम लोग की फिल्म जा रही है और लोग देख रहे हैं। नहीं रिलीज के बाद की बात कर रही हूँ। रिलीज के बाद भी देखेंगे, वो तो रिलीज के बाद का मुझे ये नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। What she's asking is your film a festival film? So that is it a boring film? No, it's a genre film. देखो क्या ना, genre film festival जो होता है वो एक अलग फेस्टिवल होता है। आप फैंटेसिया या इनसे के बारे में, वहाँ सिर्फ थ्रिलर्स और हॉरर्स दिखाते हैं, वहाँ वो फिल्में दिखाते हैं जिसके लिए ऑडियंस जाती है, वहाँ पे आर्ट हाउस फिल्म्स नहीं दिखाते। तो ये फिल्म जॉनर फेस्टिवल्स में जा रही है और ये जॉनर फेस्टिवल्स में हर जगह प्ले कर रही है, विच फॉर अस इज वेरी हार्टनिंग बिकॉज इट मीन्स दैट इट इज रीचिंग आउट टू दैट, ये वो वाली ऑडियंस जो सिटी बजाती है, तो वो जॉनर फेस्टिवल होता है। अनुराग जी सर यहाँ पे सर तापसी जी की बात की जाए तो 2019 में उन्होंने आपके साथ मर्जिया की थी, तो वो काफ़ी 18 में, हाँ 2018 में, तो जो है काफ़ी हिट हुई थी फिल्म और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तापसी जी की कोई भी फिल्म चल नहीं रही है, तो हम क्या सोचें कि आपके साथ ही उनकी हिट फिल्में होंगी? नहीं ये सब आप कैसे बात, मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ ये सब। हाँ आई थिंक आप इस तरह से फिल्म बना ही नहीं सकते। मैं तो फिल्में नए लोगों के साथ बनाता हूँ, अगर वो हिट वाले चक्कर में बनाता तो मैं स्टार्स का वेट करता रहता ना। मैं तो फिल्में उनके साथ बनाता हूँ जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो चांस लेते हैं, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं और जो मेरे साथ जो है हाथ पकड़ के चलते हैं, मैं उनके साथ फिल्में बनाता हूँ। मेरी किसी फिल्म में आप देखोगे तो आपको वो लगातार वही दिखेगा। आई थिंक तापसी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड एक्टर एंड शी टेक्स हर चांसेस एंड शी गोज आउट एंड शी ऑल्सो पुशेस अदर पीपल। चलना ना चलना तो किसी की फिल्म नहीं चल रही, और जिसकी चलनी है उसकी चल रही है, तो वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है। आजकल तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लॉकडाउन में तो सब रुका था। जी सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट। अनुराग ये सवाल आपसे है, मैं यहाँ हूँ, बजट आपके लिए कभी कंस्ट्रेंट रहा है या इस फिल्म में खास तौर पे रहा है? हमेशा फिल्म मैं ऐसे ही सोच के बनाता हूँ, बैकवर्ड्स काम करता हूँ। मैं हर फिल्म में बजट के अंदर रहता हूँ, बजट मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। और जो हमारे जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म पे स्क्रिप्ट पे बैठते हैं और बजट डिसाइड करते हैं। आई ऑलवेज वर्क बैकवर्ड्स सो दैट नोबडी लूजेस मनी। एक एक्सपीरियंस काफ़ी था, उस फिल्म में मैंने इतना लॉस ले लिया कि अगले 10 फिल्मों के लिए मैं हो चुका है। बिल्कुल आखिरी सवाल ये कि आपने तापसी के अलावा जो कास्ट चुनी है, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और खास करके नासर के कास्टिंग के बारे में, क्योंकि साउथ के बहुत बड़े विलन है। बिकॉज वो फिल्म के लिए बहुत करेक्ट है एंड हम लोग बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। वो सेट पे जिस दिन आए थे तो हम लोग तो पागल हो गए थे देख के, पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। शाश्वता हैं इस फिल्म में जो कहानी में थे, उनके भी फ़ैन रहा हूँ मैं, तो उनके साथ भी पहली बार काम करने का मौका मिला। उसके अलावा जो है पावेल है और राहुल भट्ट है। बाकी लोग जो हैं आप पहचानोगे उनको देखोगे तो, पर दीज आर आवर मेन कैरेक्टर्स एंड एक लड़का है आर्यन सावंत। सो ये हमारे की कैरेक्टर्स है फिल्म के और सभी माहिर मंझे हुए कलाकार हैं। शुक्रिया। हाय थैंक यू सो मच। अच्छा आप डिसाइड करेंगे करिए। एकता मैम और अनुराग सर, आप दोनों से सवाल है। आपकी फिल्में कंटेंट ड्रिवन होती ही है, लेकिन साथ ही साथ बोल्डनेस भी ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि आपकी फिल्में जब भी
CPFC के टेबल पर जाती है तो काफ़ी काट छाट होती है। किसने कहा पहले एक्सपीरियंस भी हो चुका है सर, बहुत सारे आपने प्रेस मेरी फिल्म कभी नहीं कटी है सिवाय मेरी सबसे ज्यादा सेंसर्ड फिल्म मालूम है कौन सी थी? बॉम्बे वेलवेट। और मालूम है क्यों? क्योंकि पहला जी वहां बैठे थे। मेरी ना वासेपुर कटी है ना अगली कटी है। अब वो किसने कह दिया मेरी फिल्म कटती है? तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। हमने तो उड़ता पंजाब भी नहीं कटनी थी। जी, तो इक्वेशन बनाने के लिए अभी ये जो फिल्म है इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कितने कॉन्फिडेंट है इस बात पर? यूए है फिल्म, मेरी यूए फिल्म देखी कभी? भाई सेंसर से निकल भी आई। सेंसर से निकल गई है फिल्म। और मैंने जिंदगी में बहुत कम फिल्म है जिसमें यू आता है, यू वर्ड आता है। मेरी हर फिल्म ए होती है, ये यू ए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। I want a lot of young people to see the film, even kids. You know, it's a very, very interesting film. It's a film for you. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. 19th August is when this movie releases in a theater. Thank you, everyone. Thank Please you, go everyone. watch. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Photo op. Guys, Right, did you we'll guys do it. like the trailer? ए, दिल से बोलो।